Okay, welcome to another stream जो कैंसिल ऑलमोस्ट होते होते कैंसिल हुई, फिर कैंसिल होते होते फिर मैंने सोचा कि वैसे भी ये सेशन ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, तो व्हाई नॉट। आई नो हम वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हैं, बहुत कम लोग आएंगे जुड़ेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन स्पेसिफिकली लोग देखें, और क्यों देखें उसके पीछे भी एक रीज़न है। तो कुछ मतलब जो टॉपिक है इस सेशन का, विच इज यू नो a self-proclaimed Mr. Perfectionist, how his name is visible when we try to get into depth and details of SSR and Disha Salyan case. And I'll tell you why. Because आज हम जो भी देखेंगे, काफ़ी लोगों को मालूम है, काफ़ी लोगों को पता होगा ये सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से हम ये कर रहे थे, और हमें बीच में ऐसे छोटे छोटे हिंट्स मिलते गए जिससे ये सेल्फ प्रोक्लेम मिस्टर परफेक्शनिस्ट के कनेक्शन के फैक्ट्स निकलते गए. सो आई थॉट दैट जस्ट बिकॉज, क्योंकि कल भी हम जब हमने फैजल खान का नाम डिस्कस किया, तो पीपल स्टिल हैड क्वेश्चंस की व्हाई फैजल खान, और you know Judy Judy is asking, is Bharat late? Yes, I am. Only 1 hour. Only 1 hour. Trust me. Actually, Judy session हमने cancel कर दिया था, but at a later stage, then I decided to resume the session again. So my point here, the only reason behind doing this session is that कल के बाद अगर कोई किसी को भी फैजल खान से रिलेटेड, आमिर खान से रिलेटेड, और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उनसे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी, तो वी सर्टनली वुड हैव इट इन माइंड कि ओके, यहाँ से ये चीज़ें कनेक्ट करती है और यहाँ से ये चीज़ें कनेक्ट करती है. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोना डू. बट बिफोर गेटिंग इनटू व्हाई दिस सेल्फ प्रोक्लेम्ड, thank you, Judy ji, for that, but not at all required. All of you present here is your love for me, so thank you so much. Okay, so all of the basic reason is that people get to know, क्योंकि इतने सारे खान्स का नाम डिस्कस हुआ है इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड. बट नाउ व्हेन वी आर गोइंग बैक इनटू द डेप्थ्स ऑफ डिटेल्स, देन वी आर गेटिंग टू सी कि हाउ कम एक नाम रह गया जो हम सबने मिस किया, एंड दैट हैपेंस टू बी सेल्फ प्रोक्लेम मिस्टर परफेक्शनिस्ट. वील सी हाउ इट इज, क्योंकि कई लोग जिन लोगों ने देखा है वो पिछले 2 हफ्ते से देखते आ रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में देर आर कनेक्शंस दैट वी आर गेटिंग. बट जब हम इनको एक साथ कोलेट करके देखेंगे, देन वी माइट बी एबल टू सी अ बिगर पिक्चर देयर और अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इट कुड बी. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ही हैज़ any kind of hand directly in the crime, but certainly there is a connection, not directly with the crime, but क्या है वो हम देखेंगे. So let's do this. I'm talking about self-proclaimed Mr. Perfectionist, Yogesh ji. It's AMIR wala, not EER wala. All right, so let's do this. उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 2 और चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा, which are very new to me. Let's do this. पहले अपन जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे बढ़ते हैं, and then later on I would be sharing 2 things which I have found are very twisted and very important to take a look at. इससे शायद हमें ये भी समझ आ जाएगा कि maybe ताई was never supposed to be girlfriend of Sushant in the first place. We'll see. Why I'm saying this, we'll see. वो session के end पे I'll be sharing that. Let's do this. अब, why are we talking about this self-proclaimed Mr. Perfectionist? Very first thing, we all know
that let me share this article with you guys. जब CDR जो हमने कल डिस्कस करी, जब CDRs आई थी, तब we got to know that Riya Chakravarti called Aamir Khan once. The CDR report stated, to which she received 3 text messages in return as a revert. Okay, so Aamir Khan was one of the name as well. Now, why it gets important here? क्यों हमारे eyebrows raise होंगे इस नाम को लेके, इस मिस्टर परफेक्शनिस्ट को लेके, is because of the fact, सबसे पहली चीज we all know, Mount Blanc, the house, who does it belong to? We know that, right? It belongs to Mr. Perfectionist, self-proclaimed again, quote unquote. Okay. Now, अब जरूरी बात तो है नहीं कि अगर उसका घर है तो यू नो इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट कि उसका कोई किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो. आई कंप्लीटली एग्री, इट्स फाइन, यू नो, वी शुड नॉट इवन थिंक इन दैट लाइन्स. बट फिर हमारा दिमाग उधर क्यों जाता है? वाई डू वी थिंक, और व्हाट कनेक्शन डिड वी सी which kind of took us there? Let's begin. सबसे पहले एक ये चीज आई थी हमारे सामने कि पोस्ट सुशांत डिमाइस 15 days लेटर हमने वो इंटरव्यू भी चलाया हुआ है, जो मैं अभी फिर चलाऊंगा. इंटरव्यू ही चलाते हैं, वो देख के समझते हैं. धीरे धीरे 8 जून के केस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो वीडियो इंटरव्यू में चलाने वाला हूँ उसमें 8 जून से भी रिलेटेड एक इंसान है, उसमें 14 जून से रिलेटेड भी 2 इंसान है. सो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट या रिलेटेड. लेट्स गो. ओके, एक सेकंड ना गाइस. There we go. ये इंटरव्यू हमने पहले भी देखा है, बट इट इज फॉर ईच एंड एवरी वन जो जिनके लिए ये एंगल ही नया है. सो आई वांटेड टू डिस्कस दिस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिगिन विथ, this particular house, Mount Blanc, belongs to Aamir Khan's uncle. Okay, and if we also know that Dil Chahta Hai was shot there. This house was also used in the shooting of Dil Chahta Hai. Let me share the screen और अपन देखते हैं कि हम क्यों देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं. If we all remember this interview, right? It has Shaheen Bhatt, Mahesh Bhatt's daughter. It has Rashmi Desai, who was, kind of, she seemed kind of shady while the questioning was going on by Republic and other journalists about the Shah's case. Okay. And there is one doctor. Okay. We'll see who it is. Now, the thing is, कि this particular interview took place, ये जो इंटरव्यू हुआ, ये हुआ 25th June 2020, which is just 11 दिन post सुशांत डिमाइस. ये एक सेशन होता है जिसमें they talk about tackling depression in the times of COVID-19. ठीक है, let me share this. Has survived some extremely difficult. So we have who? Mahesh Bhatt's daughter, Shaheen Bhatt, Rashmi Desai, and Dr. Harish Shetty. 2 people whom we have heard their names in relation to finding connections with SSR case, and one whom we have heard related to Disha's case, which is Rashmi Desai. Let's proceed. Good years of mental. Yeah, she is. So this here is Dr. Harish Shetty. This is Shaheen Bhatt. And आगे अभी has been very unfortunate. Rashmi Desai also. Trying. Rashmi Desai also joins in. So यहाँ पे ध्यान दें
Disha case, SSR case, not directly, but her father obviously, SSR case. अब कुछ लोगों का कहना है कि हरीश शेट्टी ने तो डिनाई कर दिया था कि उसने सुशांत को कोई भी मेडिसिन नहीं दी। अगर आप जाके गूगल में इफ यू गो हेड एंड सर्च हरीश शेट्टी के स्टेटमेंट्स, आपको दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे। एक में जिसने उसे बोला है कि 2014 में एसएसआर केम टू मी, ठीक है, विद अ प्रॉब्लम ऑफ इंसोम्निया एंड एंजाइटी एंड दैट्स अबाउट इट। और एक में उसने ये बोला है कि मैंने एसएसआर को कुछ भी कभी प्रिस्क्राइब किया ही नहीं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स। नाउ व्हाई दिस पर्सन हरीश शेट्टी गेट्स important here, we'll get to know. बट ही गेट्स important क्योंकि ये हर जगह, मतलब मुझे जितना ये दिख रहा है कि दिस पर्सन इज प्लांटेड, प्लांटेड जैसे कि और भी इस केस में कई चीजें प्लांट हुई है टू लाइक लोगों को गुमराह करने के लिए। तो दिस हरीश शेट्टी हैपेंस टू बी वन ऑफ दोज फैक्टर्स और एलिमेंट्स फॉर मी। ओके, नाउ अब हमने रश्मि देसाई देख ली, हमने शाहीन भट्ट देख ली, हमने हरीश शेट्टी देख लिया। मतलब दिशा और सुशांत के साथ में बैठे हैं 25 जनवरी को और वो बात कर रहे हैं मेंटल डिप्रेशन के ऊपर। 25 जून को, माय बैड, 2020, मेंटल डिप्रेशन के ऊपर। ठीक है, काइंड ऑफ थ्योरी फैलाने वाली बात हो गई है। बट व्हाई डिड आई से सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट? यहाँ पे भुवन, भुवन का नाम क्यों आ रहा है बीच में? नॉट भुवन बाम, बट लगान वाला भुवन, भुवन व्हाटएवर, उसका नाम क्यों आ रहा है? अब सिर्फ माउंट ब्लैंक उसके अंकल का है डजंट मीन ना कि उसका नाम ऐसे बीच में आना चाहिए। बट अगर हम ये देखें कि रिया चक्रवर्ती के फोन से उन सारे लोगों को कॉल गई है जिनका नाम इस केस में किसी ना किसी तरीके से आया है, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, अ कपल ऑफ मोर, एंड आमिर, आमिर खान। वो तो सीडीआर का स्टेटमेंट ही बोल रहा है और ऐसे 7 से 8 आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे। ठीक है, क्लियरली लिखा है। और आमिर खान की पीआर टीम ने कंफर्म भी किया है कि वो आमिर खान का ही नंबर है एंड ही रिस्पॉन्डेड विद 3 एसएमएसेस टू दैट वन कॉल। ठीक है, 3 मैसेजेस। बट ये भी कोई इंपॉर्टेंट, ये भी कोई बहुत ज्यादा ठोस चीज नहीं है या इतना ज्यादा एविडेंट नहीं लग रहा कि ठीक है चलो अगर हरीश शेट्टी, रश्मि देसाई और शाहीन भट्ट मिले हैं तो उससे फिर इसका क्या लेना देना, है ना? भुवन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। थम्स अप योगेश, थम्स अप। अभी हम आगे देखेंगे कि हम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो भाई तब भी लोग पूछ रहे थे कि आमिर खान का नाम क्यों आ रहा है, आमिर खान का नाम क्यों आ रहा है। अब होता यह है, हमारी नजर पड़ती है एक इंटरव्यू पे। लेट मी शेयर दैट। ये इंटरव्यू जो हमने उस दिन भी देखा था, भुवन एज इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट, संगीता जी। तो ये इंटरव्यू हमने उस दिन भी देखा था। क्यों देखा था? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम फैजल खान की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर आई प्ले दिस वीडियो फर्दर, आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। हम फैजल खान की बात यहाँ पे, एक पर्टिकुलर रीजन है। अगर हमें पता हो फैजल खान, आमिर खान younger brother, who was also in Mela with the Bhuvan character of Lagan. ठीक है, नाउ अगर हम आज से 10 साल पहले जाएं, 10 भी नहीं, 12-13 साल पहले जाएं,
इसके बारे में हमेशा यही न्यूज़ रहती थी कि ही इज़ मेंटली इल, और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिम, ही इज़ नॉट फाइन, और उनका लंदन में ट्रीटमेंट चल रहा है, या ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारी न्यूज़ थी, राइट? एंड वी ऑल्सो हर्ड दैट आमिर खान इज लाइक काइंड ऑफ हेल्पिंग हिज ब्रदर आउट, लेकिन कई जगह ये भी न्यूज़ थी कि आमिर खान इज द वन हु इज डूइंग थिंग्स टू हिम। एंड देन देयर वाज ऑल्सो अ न्यूज़ कि आमिर खान और आमिर खान के अपने ही फादर के बीच में केस चल रहा था फैजल खान की कस्टडी के लिए, कि इसकी कस्टडी किसके पास रहेगी इस एज तक, इस एज तक। मेरे पास एक बार वो होगा, लेट मी शो। I got it. I got it. Let me share the article, okay? Aj, Judy, you have a point. People tend to understand Amir Khan as one who has a lot of integrity, and he is the only uh, stable guy, according to them in Bollywood. But that's not true, and we'll see what's happening. We'll see why we are discussing him in detail. मैं एक quickly, let me share this article. Okay. Hmm. So this is an article by Khalij Times. If you know Khalij Times, दुबई का वो है, मतलब इंडिया में भी ये मैंने डक डक गो से निकाला है, तो मुझे खलीज टाइम्स का सबसे पहले दिखा. सो दिस इज व्हाट आई पुल्ड अप. ओके, लेट्स सी. I love my brother and will support him wholeheartedly. This is by Amir Khan. Okay. The battle is between Amir and his father Tahir Hussain. While their father Tahir Hussain says there is nothing wrong with Faisal, Amir, his mother, and sisters say Faisal is in urgent need of medical help. Faisal has also accused Amir of forcibly confining him in their house, but he is currently undergoing a series of psychiatric tests at JJ Hospital ordered by the court. Okay? Amir has laid out several reasons to the court in his written affidavit as to why he and not his father should get Faisal's custody. तो यहाँ पे ये clear हो जाता है कि आमिर खान was trying to fight his own father for his own brother's custody at such an age. जबरदस्ती इलाज करवाना तरीके से. Amir says that his father has never taken responsibility of Faisal's treatment and has been in debts for a long time now. To my understanding, my father is on the verge of becoming insolvent. He is incapable of looking after Faisal financially or emotionally. Even the house that he is presently living in with a lady called Shehnaz for past 16 years is mortgaged to XYZ, and he has no other home. In the event of failure to repay the loan availed my father may lose his flat. अब एक बेटे से एक बेटे से इतना नहीं हुआ कि वो अपने फादर की ईएमआई चुका दे, और वो वहां पे क्या कर रहा है? वो वहां पे ये कह रहा है मीडिया में जाके कि माय फादर इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. मैं तो कुछ नहीं करने वाला हूं उनके लिए, लेकिन मैं ये दुनिया को बता रहा हूँ कि माय फादर इज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल. एंड ऐसे लोगों को हम बनाते हैं रोल मॉडल्स. ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट. आई मीन, सीरियसली, fighting his own father and saying such things to his own father. आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हमने अभी तक देखा कि आमिर खान और फैजल खान के बीच क्या चल रहा है. बट
हम फैजल खान की बात कर क्यों रहे हैं? हम्म? हाँ? क्योंकि फैजल खान का तो कोई लेना देना नहीं है। हम मान गए कि आमिर खान के अंकल का माउंट ब्लैंक, एक तरह से फैजल खान के अंकल का भी माउंट ब्लैंक, लेकिन रिया चक्रवर्ती के सीडीआर में आमिर खान का कॉल है। हाँ, ये फैक्ट्स बता रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज आउट इन द मीडिया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे मुझे मतलब खान्स के ऊपर मत करो, चैनल ब्लॉक हो जाएगा। यार, वी आर टॉकिंग anything and everything which is there on the media, and then we are talking about the possibilities and nothing else. We are not putting out claims. And I would request anyone and everyone who is doing it, only talk on the factuals available and do not say anything which is not available on the internet. Okay? So, let's proceed. अब दिखाते हैं कि हम फैजल खान की बात यहाँ पे कर क्यों रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमें एक पैटर्न दिखा। ठीक है, लेट मी शेयर दिस वीडियो। इस पैटर्न से हम सब समझेंगे और हम सब सुनेंगे, एंड देन वी विल कम आउट टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्षमा करने की जरूरत नहीं। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में। I'm not a person who fights. I'm a very calm person. I'm a calm person. But if you walk करेंगे तो फिर मैं वो रिएक्ट तो करूँगा। तो करो तो आप दीवार तक जाएगा तो आप तो रिएक्ट करोगे। तो वैसा हो गया। तो खैर वो आमिर आए घर पे एक दिन डॉक्टर और पुलिस के साथ, और उन्होंने बोला फैसल यू बिकम मैड एंड ऑल दैट एंड यू नो यू आर नॉट टॉकिंग। Prochesta, the answer to your question is post SSR's demise. Exact date they have not given, but it's post SSR's demise. That's what they have said in the article, but they have not given the exact date. तो ऐसा और ये वो जो भी, पुलिस के साथ और 40 बॉडीगार्ड बिल्डिंग में, 40 बॉडीगार्ड 40 बॉडीगार्ड और रस्सी और स्टिक और पता नहीं क्या क्या होना। तो मैंने बोला आमिर, मैं तो हंसा, बोला आमिर यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, यू जस्ट कम एंड टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम इज एज अ फैमिली। तो ये सब शोर और हंगामा करने की जरूरत नहीं थी। तो खैर वो लेके आए और उन्होंने बोला फैसल यू हैव टू कम टू द, अभी हम तुमको क्लिनिक में लेके जाएंगे, वहाँ तुम्हारा मुआयना करेंगे बिकॉज यू हाँ बात बहुत, अभी आपको बताता हूँ, आप पूछ रहे हैं। तो वो तो बोले नहीं, तो अगर तुम नहीं चलोगे तो तुमको, हम डॉक्टर है यहाँ, वो तुमको इंजेक्शन देगा, तुमको बेहोश करके हम लेके जाएंगे। तो मैंने बोला How elder he is to you? He is 1.5 years elder. तो मैंने बोला आप ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, चलो मैं ऐसे ही चलता हूँ। मैंने, मुझे लगा जाएंगे कुछ टेस्ट वेस्ट करेंगे छोड़ देंगे। तो वो जब मैं उन्हें लेके गए एक अंधेरी में कोजी नर्सिंग होम में, वहाँ लेके गए मुझे, तो वहाँ तो फोन वोन ले लिया और वहाँ वो रूम में कैद कर दिया और दे आर लिसनिंग टू मी, और सब बॉडीगार्ड्स वहाँ भी रखे थे। तो मतलब मुझे किसी से मिलने की इजाजत ही नहीं है बाहर दुनिया में। और फिर फैमिली वो सब साथ में थे ना वो लोग। अब्बाजान had got married second time, so he was not staying at home. My father, he had got married to another lady. He was not there. Yeah, so he was not with the with them. Your sisters? Sisters were all a part of other side. Yeah, all. So you were alone. I was alone. I was alone in that. And मैं बोल रहा हूँ कि तो मैंने कहीं पढ़ा था, कितने साल पहले की बात है? ये 2007 में हुआ, नहीं 2005 में हुई थी ये बात। 2005 में ये सब बात रीडिंग, और उससे वो मैंने कहीं भी पढ़ा था। ओके, फिर तो क्या हुआ कि ये सब हुआ मेरे साथ। तो मैंने बोला मैं तो दवा लूंगा नहीं बिकॉज आई एम नॉर्मल। तो वो सोचे कि आप लो, आप दवाई लो, तो वहीं बंद कर दिया, मेंटल की दवाई लो। तो अब वो लोग क्या कर, मैंने बोला मैं दवा लूंगा नहीं भाई। तो उन्होंने मेरे पानी में, अब ये सब इलीगल काम है, इंजेक्ट करने लग गया दवा, और मैं सोने लग गया 20-20 घंटा वहाँ हाँ पिला दिया फोर्सफुली, पानी में इंजेक्ट कर दिया। ये सब इलीगल काम है क्या। तो मैं सो रहा हूँ 20 घंटे। तो मैंने बुलाया हाउ इज दिस पॉसिबल। तो फिर मैंने बुलाया उन लोगों को, वो लोग रोज आते थे सिस्टर मिलने। मैंने बोला सुनो, यू आर गिविंग मी सम मेडिसिन, आई नो दैट बिकॉज़ आई एम स्लीपिंग फॉर 20 आवर्स, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आई सेड नॉर्मल, तो मुझे मेरी जान का खतरा था। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरी जान का खतरा था, मुझे ओवरडोज हो जाए, आई लूज माय लाइफ। तो आई सेड दैट लिसन, स्टॉप ऑल दिस, स्टार्ट गिविंग मी द प्रॉपर डोजेज, आई विल टेक द प्रॉपर, एटलीस्ट डोजेज के हिसाब से तो मिले जितना हम लोग चाह रहे हैं, ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा, आई लूज माय लाइफ। तो फिर मैंने दवा लेना शुरू कर दी अंडर फोर्स, जो वो लोग दे रहे हैं। हाँ, अंडर फोर्सफुल सिचुएशन। नहीं, डॉक्टर आल्सो वाज ऑन देयर साइड। सब ये आमिर ने पूरा डॉक्टर नहीं था तुम्हारे को? ये कुछ मेंटल डॉक्टर था, हरी शेट्टी है क्या। हाउ सक्सेसफुल आमिर वाज देयर? तो आई होप यू गाइज हैव हर्ड इनका मोडस ऑपरेंडी, इनका जो पैटर्न है
That is exactly same as what happened with SSR, giving few drops in drinks or water or coffee or maybe anything and ensuring that he sleeps for the entire day. That's what they ensured. And इनका डॉक्टर है अंधेरी वाला हरीश शेट्टी. तो हरीश शेट्टी नाम यहाँ पे आया, ठीक है. अब अगर हरीश शेट्टी का भी नाम आया तो मैं क्यों ही बोलूं, नहीं. फैजल की बात, फैजल कुछ भी हो सकता है, मे बी फैजल ऐसे बोल दिया, एक डॉक्टर का नाम ले दिया, बट हम क्यों आमिर का कनेक्शन उससे क्यों निकाल रहे हैं? अभी भी कुछ होता नहीं है ना, अभी भी आमिर से कनेक्ट नहीं होता, आमिर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि अभी हमने हियर से देखा है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक आप समझे, जो क्रोनोलॉजी समझो, जैसे वो बोलते हैं ना, क्रोनोलॉजी ऐसे 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 करके कुछ तो ऐसी एक्शन होता है क्रोनोलॉजी का. हाँ, तो ताई आमिर का कॉल, माउंट ब्लैंक आमिर के अंकल का, 11 जून के बाद 14 जून के 11 दिन बाद 25 जून को एक सेशन होता है जिसमें रश्मि देसाई, दिशा की बेस्ट फ्रेंड, शाहीन भट्ट, महेश भट्ट की डॉटर, एंड डॉक्टर हरीश शेट्टी इज देयर, जो मेंटल थ्योरी फैला रहा है. मतलब एक प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे, है ना, मेंटल थ्योरी पे बात हो रही है. एंड फॉर मी ऑल दे आर द पार्ट. अब फैजल खान ने हरीश शेट्टी का नाम लिया, ठीक है, पैटर्न भी सेम है, 20-20 घंटा सोना एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद एसएसआर एज पर द रिपोर्ट्स अवेलेबल ऑन इन दी ओपन सोर्स. बट हम एक हियर से पे आमिर खान का कनेक्शन कैसे मान ले? नहीं, बात ये भी सही है, मतलब एक्चुअली वेरी ट्रू. हम उसी आर्टिकल पे वापस आते हैं. हाँ. He has also confessed that he had been supporting his father financially for the past few years, but he has stopped for the last 1 month. He has been providing for Faisal, had given him rupees 6 lakh to start framing, and the house that he has been staying is also owned by Aamir. He explains what happened on September 29th when Faisal ran away from home. Dr. Harish Shetty, who has been handling Faisal's treatment, and I met with Faisal in my house for a consultation. Dr. Shetty explained to Faisal that sometimes in the illness, patients might not be taking their medication properly, and as a result, there might be a relapse. Faisal assured us that he was indeed taking the medication. Then Dr. Shetty asked Faisal if he would mind if we appointed a person to give him his medication. Faisal said that he had no problem with that whatsoever. अब सिर्फ फैजल खान नहीं, बट ये आर्टिकल भी प्रूव कर देता है कि हरीश शेट्टी was the one who was managing his treatment, so-called treatment, and making him sleep for hours and hours. Exactly, Yogesh. सिजोफ्रेनिया यूजुअली मतलब 18-20 घंटे सुलाने का मतलब ही नहीं है यार, ठीक है. एग्जैक्टली रोजा कितने राज जानता होगा. बट अभी भी चलो ठीक है, मान लिया कि हरीश शेट्टी वुड बी अ फेमस डॉक्टर, जितने भी लोग जाते होंगे हरीश शेट्टी के पास जाते होंगे फॉर सच थिंग्स. ये भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट, जब हम हर पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं. फैजल खान ने बोल दिया हरीश शेट्टी, इस आर्टिकल में हमने पढ़ लिया हरीश शेट्टी. बट ये तो हो गई प्रोफेशनल बातें कि ट्रीटमेंट के नाम पे इट वाज हैपनिंग. ओके, अब मुझे एक बात कोई बताए, हरीश शेट्टी एंड आमिर खान, इनका अभी भी हमें कुछ डायरेक्ट मिला नहीं, राइट? तो डायरेक्ट है, अभी तक हमने हियर से ही देखा है. लेट मी शेयर दिस. Can we trust any of these? Because ultimately blood is always thicker than water when they change their stories.
You have a very right point. But again, अभी तक stories change नहीं हुई हैं. It remains the same in terms of Sushant sleeping for so much time, because a lot of his friends have also gone ahead and committed to that, and also the fact कि Aamir Khan का नाम is there in the CDR, and also the fact कि Harish Shetty was seen along with Rashmi Desai and Shaheen Bhatt spewing or promoting the mental theory just 10 days later Sushant's demise, right? Mount Blanc also belongs to Aamir, as I said. अब देखते हैं कि आमिर खान इनको पर्सनल लेवल पे कितना जानते हैं. WHO data shows 2.2 lakh suicide deaths happen per year in India, making upcoming World Mental Health Day's theme more relevant. Okay, now 2019 की बात है ये, जब this particular theme was being run और बहुत ज़्यादा mental health प्रमोट किया जा रहा था. World Mental Health Day is on 10th October, but activities to mark the day for raising awareness and making mental health care accessible have already started on 2nd October. Actor Aamir Khan retweeted Dr. Harish Shetty to champion emotional hygiene as a way to nip stress and depression in the bud. Again, actor Aamir Khan retweeted Dr. Harish Shetty. So यहाँ पे एक तरीके से we can know that actor Aamir Khan, some way or the other, despite of the fact that at a professional level he was treating his brother, he was also endorsing Harish Shetty. उसका वो connect तो है, right? सिर्फ endorse नहीं. It's about his brother. Judy, आप जितने भी इंटरव्यूज देखोगे ना, नॉट जस्ट दिस मुकेश खन्ना वाला शो, जितने भी इंटरव्यूज देखोगे और जितनी भी इंफॉर्मेशन फैजल खान ने बोली है, each and every information, each and every piece of it is available in the open media, including the fact that his father has also supported Faisal, and they are glad and happy that they have won the case. जो ये केस चल रहा था कस्टडी का, at the end of the day they have won it. ठीक है. अब उसके बाद आमिर खान एंडोर्स भी करता है ट्वीट करके हरीश शेट्टी को. नो बिग डील, चलता है, ठीक है यार, भाई का डॉक्टर है, उसने कुछ देखा जो मेरे को काम का देखा और मैंने एंडोर्स कर दिया, ये भी चलो सही है. बट हरीश शेट्टी के साथ कनेक्शन यहाँ खत्म नहीं होता आमिर का. किसी ने अभी कमेंट में ऑलरेडी लिख दिया और मैं वो शेयर भी कर देता हूँ. ये है वो शो जिसने हम सबका अच्छा बेवकूफ बनाया. और लेट्स प्ले एंड लेट्स यूज द गेस्ट. रोड एक्सीडेंट्स के बाद वो है सुसाइड यानी आत्महत्या. इसके पीछे क्या कारण है, ये समझने के लिए बात करते हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी से, जो एक साइकियाट्रिस्ट है. आइए सर. डॉक्टर शेट्टी, आपको क्या लगता है श्वेता के साथ क्या हुआ होगा? बहुत मुश्किल है कहना उनके साथ क्या हुआ होगा. So this video also tells us that Harish Shetty was also promoted at a national level by this person Aamir Khan in Satyamev Jayate. तो अब now if you see everything from the starting कि रश्मि देसाई भी थी, शाहीन भट्ट भी थी, हरीश शेट्टी तो था ही था. थैंक्स टू फैजल खान भी गॉट टू नो कि उनको ट्रीट क्या मतलब सुशांत के पैटर्न के तरीके से ही उनको भी इस तरीके से ड्रग इंड्यूस किया जा रहा था when in the year 2005-7 in the back. And now we also see that Aamir Khan and Harish Shetty are like उनका एक कनेक्ट है. So who's to say? एक सेकंड.
हाँ, so who's to say that जो ये माउंट ब्लैंक का घर लिया रिया ने, ये सब पहले से ही एक प्लान नहीं था, क्योंकि वही टाइमलाइन है, वाटरस्टोन रिजॉर्ट वही टाइमलाइन है जब से सुशांत को इस कंडीशन में रखा जा रहा था। वाटरस्टोन के बाद दे गॉट हिम डायरेक्टली टू माउंट ब्लैंक। इससे एक और चीज पे आएंगे हम आगे, बट पॉसिबिलिटीज, राइट? अब इतना डायरेक्ट कनेक्शन रिया के सीडीआर में और किसी खान या कपूर का तो नंबर नहीं आया ना यार। जिसका आया उस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में सोचने वाली बात है कि इस पे किसी ने बात ही नहीं करी थी, क्योंकि ये किसी के सामने ही नहीं आया था, क्योंकि हरीश शेट्टी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हरीश शेट्टी पे ध्यान गया, उसके बाद फैजल खान की 4 महीने पुरानी वीडियो सामने आई और उसमें हरीश शेट्टी सामने आया, हरीश शेट्टी और आमिर खान का कनेक्शन सामने आया। And now, if you see, it's an entire circle which completes. And I hope अगर ये वीडियो उन सब के लिए है जो बाद में भी देखेंगे, जिन्होंने जो आज तक कंफ्यूज थे कि हम क्यों सेल्फ प्रोक्लेम्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट की बात इस केस से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि बाकी 2 खानों की बात हुई है बॉस, सबने करी है इस केस से रिलेटेड, और हमारे पास तो फैक्चुअल्स भी हैं इस नाम से रिलेटेड कि इन सर को कॉल गई है रिया चक्रवर्ती से, जिसका इन्हें रिवर्ट में 3 एसएमएस आए हैं। So it's a very big question and it needs to be raised. Nitish Rai, yaar, is it Nitish R Rai who is in our chat right now? Can you confirm Nitish Rai? Nitish R Rai, are you that? Okay. I hope this gets clear. If still anyone has question, go ahead, put across in the chat. Maybe some new aspect that I might see or we might get to see right away. Nitish Rai is just sending eyes and eyes. Nitish, are you Nitish R Rai? If I may ask. डिस्कशन ऑन एसएसआर पेरेंट्स, नहीं, मैं आज इस इंसान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, उससे ऐसे मत पूछो हु यू, मैं बस पूछ रहा हूँ कि आर यू नितिश आर राय ऑन इंस्टाग्राम, इफ नॉट राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
ओके, हमको माफ कर दो, कनेक्शन इज नॉट वीक, एक्चुअली हुआ ये कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमेशा होता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है नीतीश राय जी, आज आपकी बात नहीं होगी, आपकी बात कल होगी, आप कल आइएगा। आज आप गलत सेशन में आए हैं, हमें और भी कुछ मिला है पता है आपसे रिलेटेड, अगर आप वही हो तो। अदरवाइज लेट्स बिगिन। ओके, सो the connection of so-called quote unquote Mr. Perfectionist to Dr. Harish Shetty, and Dr. Harish Shetty, we all know how is he connected to the SSR case, and then again why was there a call from Riya Chakravarti to Aamir Khan in the first place post SSR's demise? मतलब ये क्वेश्चन पूछना हमारा हक नहीं है कि कॉल क्यों किया, बट वो जो कॉल किया क्या वो कहीं से भी कनेक्टेड हो सकता है? दैट्स आवर क्वेश्चन. Oh yeah, I was back after a blank because there was electricity issue. Apologies for that. Kejriwal is to blame for it, obviously. Apologies, but yeah. So again, guys, इस सेशन को अगर आप शुरू से दिमाग लगा के देखो, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज पीपल whosoever has been discussed might or might not have any kind of hand or any kind of thing to do directly with the technical crime, but there's certainly something shady out here going on. P Jain, what's your question? ऊपर पूछा है क्या तुमने? एक सेकंड. P Jain, has Thai filed case against Harish? No, I don't see that. He did not. She did not. She only filed case against. No, 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 no. Okay, Harish Shetty is not that Delhi wala doctor. He's not that Delhi wala doctor who prescribed to his sister, as it was being said. Thai has gone ahead and filed an FIR on a very different angle. Let's not mix that here. Okay. So again, Harish Shetty being there with Rashmi Desai, with Shahin Bhatt, with Aamir Khan, with Riya Chakravarti, with team. So please, Aamir Khan is one name which is popping up over and again. अगर हम डिटेल्स में एकदम डेप्थ में जा रहे हैं तो अब सॉरी, मुझे एक चीज डिस्कस करनी है. Moving further from this self-proclaimed Mr. Perfectionist, do you guys think Riya was Sushant's girlfriend? I would like to thank to the SSR warrior who brought what they brought to me yesterday, and that raises a lot of questions. Nitish, I would be pinging you on Instagram. In you know which account I'm talking about. Your account. We'll talk. ठीक है? Not the walk of life wala account, the other one, the one which is by the name handle Nitish R Rai. Okay. All right. Let's proceed. अब मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. BBC has problem with frontline SSRian YouTubers. Don't give up. Oh, don't worry जोशी जी, यार BBC रोते रह जाएंगे. क्या नो नो नो? सब दो नो नो बोल रहे हैं, नो 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 क्यों बोल रहे हैं? Yeah, I know they played video. उनका एक प्रोमो चल रहा है. Exactly, Devasmita, you have a very important question. Even I think that. But if you remember, there was a time when SSR, during the promotion of the movie Chichore, rejected claims of him seeing Riya. Remember that? एक चीज देखते हैं वो.
Okay. एक आर्टिकल शेयर करना है, इम्पोर्टेंट होती ये आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती और हमको समझ आती कि चल क्या रहा है, और ज़्यादा कंफ्यूज कर देती। आई डोंट नो कितने लोगों ने इस आर्टिकल पे ध्यान दिया है या ये उनके सामने आया है, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि ये सबके सामने आए, and it's important for all of us to share it. सबसे पहली चीज, लोग कहते हैं कि SSR and Ria met in just one particular party and that's how they started being together. Today, that claim is gone. And now my claim, my new take could be a possibility that Ria was a part of Sushant's team. And let me show you why I am saying that. After reading this, Sushant Singh Rajput, Riya Chakravarti's vacation pictures from Ladakh are giving us the thrills. Let's read what it has to say. कहाँ गए, कहाँ गए, ऊपर ही है, ऊपर ही है. Sushant Singh Rajput and Riya Chakravarti's recent pictures have left their fans in a state of confusion. Are the actors holidaying or shooting in Ladakh for director Siddharth Pithani? June 23rd, 2019. I hope you're all able to see. They were doing a movie for director Siddharth Pithani. और पढ़ेंगे आगे, और मिलेगा, काफी कुछ मिलेगा. रुको 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 एक सेकेंड. Fans are assuming that the duo has been vacationing together in the picturesque locales of the place due to their growing fondness for each other. But is it true? According to sources, Sushant and Riya are supposedly shooting for director Siddharth Pithani's film. The duo has been shooting for the film Fanny Cyclone, that is the name of the film, in Ladakh and Odisha. You remember Riya का एक WhatsApp chat आया था, I am in Odisha, I am just loving this best weed ever and all that. He's a storyteller and director, by the way, Siddharth Pithani. This particular article is from Spot Boy, उन्हीं की बिरादरी का है, तो किसी ने अब वो अपने ही लोगों के बारे में झूठ थोड़ी लिखेंगे यार. This is published on June 23rd, 2019. सिद्धार्थ पिठानी इज अ स्टोरी टेलर एंड अ डायरेक्टर. अगर तुम ये ढूंढोगे भी जाके ऑन गूगल, तो यू वुड गेट थिंग्स, यू वुड सी. ओके, सो दीज आर द पोस्ट्स जिसमें इसने सबको टैग वैग किया हुआ था, ये इसके उसका था. See, whereas the post of Kedarnath star said space time crunch, thank you Siddharth Pithani for this picture. ठीक है, ये it is from where they went, but ये इसके फार्म हाउस का है, by the way. On the work front, Sushant will be seen next in Chichore, co-starring Shraddha Kapoor and Varun Sharma in lead roles, which is stated to release on August 30th, 2019. On the other hand, Riya Chakravarti, blah blah blah. Both the posts by the actors hint that they are shooting with director Siddharth Pithani for his upcoming film. अब मुझे कोई ये बताए, चलो मैं एक और आर्टिकल ढूंढने की कोशिश करता हूँ अपार्ट फ्रॉम स्पॉट बॉय.
फैनी इन्होंने, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से आर्टिकल निकाला है। एक सेकंड, मैं आर्टिकल का लिंक भी भेज दूंगा आप लोगों को, बट एक सेकंड। फैनी साइक्लोन सिद्धार्थ पिठानी। स्पॉट बॉय मिल गया। ओके, सो करेंटली स्पॉट बॉय का ही आर्टिकल अभी अप है, और एक टेली चक्कर का भी अप है। डिजास्टर एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स, IMD। Just JUXTA Films was the name of his company. एक सेकेंड। क्योंकि अगर हम अभी ये ढूंढने जा रहे हैं, तो फैनी साइक्लोन, अगर आप इसके बारे में ढूंढोगे, द मूवी, फैनी साइक्लोन मूवी, there was also one particular article related to this which also had Samuel Miranda's name in the team of this crew. I'm just trying to find that, but most of them have been removed. मैं बस एक चीज और चेक कर लूँ, सॉरी फॉर दिस। इन द मीन वाइल मैं आपको वही वाला आर्टिकल सामने खोल के रख देता हूँ, सो दैट आपको ये मनहूस चेहरा ना देखना पड़े, और कुछ अच्छी फाइंडिंग जो एक्चुअली है। Not this, not this, not done. Wait. कुछ पार्ट शूट भी हुआ था, यस, सुशांत का। उसके बाद एक कमेंट भी आया था कि ही इज वेरी हैप्पी क्योंकि वन ऑफ इट्स पार्ट हैज बीन शॉट एंड द अदर पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग। देयर वर टू पार्ट्स व्हिच हैड टू बी शॉट। Okay. And if we also see, he also requested his fans specifically for this Fanny Cyclone, because this particular project was already on the cards and was being directed by Siddharth Pithani. So मैं आर्टिकल्स और निकाल के डाल दूंगा, अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर लूंगा। बट दिस इज समथिंग विच वी रियली नीड टू गो अहेड एंड सी। एक इमेज भी है, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ। वेट 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 वेट, ये वाली। यप 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 यप। If you are able to see, Sushant and Riya are co-stars and were shooting for director Siddharth Pithani's film Fanny Cyclone in Ladakh and Odisha. Talking about the work front, Sushant will be seen next in Chichore, co-starring Shraddha Kapoor and Varun Sharma, while on the other hand, Riya Chakravarti will be next seen in Rumi Jaffri's Chehre along with Amitabh Bachchan and Imran Hashmi. Talking about the film, Sushant says it is about two generations. I have shot for one character. I am yet to experience the other character.
The first story in itself is a great story and they are all interlinked. I was touched when I read it. Anji, और अब अगर आप सोचो, now if you think, could this be a possibility कि using this movie as a ploy, Siddharth Pithani as a director and Riya Chakravarti as a co-star was kind of planted in Sushant's own team because he had a team with whom he used to work. Siddharth Pithani was one of them. और इसकी टीम इसके घर पे ही रहती थी. So could it be, क्या ऐसा हो सकता है कि या एग्जैक्टली सावी सिंह, ही इज अ स्टोरी टेलर एंड अ डायरेक्टर. उसका अगर आप चेक भी करोगे बायो, तो यस, ही हैज डन अ फ्यू थिंग्स इन साउथ इंडस्ट्री एंड ऑल दैट. अब दो चीजें हो सकती है, ठीक है. या तो ये स्पॉट बॉय का आर्टिकल झूठा है जो 2019 जून के महीने में वो हुआ है, क्या बोलते हैं, बना है, अपलोड हुआ है. या फिर सिद्धार्थ पिठानी एंड रिया इंट्रा, हाँ, या फिर सिद्धार्थ पिठानी एंड रिया वर काइंड ऑफ, you know, like plotted using a ploy of this particular movie and being a part of a team, then started staying together and then started to get close, and that is how things happen and that is how the entire control was taken. Shivangi is saying yes, they were surely planted, and I am saying that this movie was one of the ways for them to be planted, which is Fanny Cyclone, Sushant and Riya co-stars, directed by Siddharth Pithani. क्या बोलेंगे? और भी एक चीज थी, अब जैसे कि आज नितिश आर राय जी आके यहाँ पे हमसे बात करके जा चुके हैं, नहीं तो हम कुछ और भी शेयर करने वाले थे, बट आई वुड रियली लाइक टू टॉक टू हिम फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ डिफरेंट सी चीज़ें दिखी हैं जो मैं उनसे क्लैरिफाई करना चाहूँगा बिफोर पुटिंग इट आउट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी ट्विस्टेड टू मी, सो आई रियली वांट टू चेक. एंड रही बात ये, आज का जो सेशन जो शुरू के 40 मिनट्स हैं, 45 मिनट्स हैं, आमिर खान, सेल्फ कॉल्ड मिस्टर परफेक्शनिस्ट, जिनका नाम रिया की सीडीआर में भी आया था, जिनके अंकल का माउंट ब्लैंक है, जिनके भाई को ट्रीट करने वाला डॉक्टर वही है, जिनको ये पर्सनली भी प्रमोट करते हैं और एंडोर्स करते हैं, जिसने एसएसआर को भी सेम तरीके का, मतलब एसएसआर के केस में भी एक तरीके से प्लांटेड थ्योरी बनाई, या फिर पहले बोले कि हाँ वो मेरे पास 2014 में आया था, फिर बोले कि नहीं वो तो मेरे पास आया ही नहीं, या फिर मैंने उससे कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं किया. देयर वर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिम एज वेल, and the same pattern, the same modus operandi was being followed in terms of giving drugs to Sushant, giving him psychotropic substances so that he sleeps for 20-25 hours. And now I can say after reading this article, thanks and blessings to the person who came and gave it to me and told me to go through it, that this particular article, which states that they were doing a movie together and Siddharth Pithani was a director, very much brings everyone together as a pro team. And now I don't think Sushant was in a relationship with Riya, but maybe post they becoming pro team, they might have gotten close because family is also aware about a few things which has been said in public, and if that would have not been true, they would have raised voice against it, or maybe they would with time, right? So we have to understand all possibilities, हर possibility को हाथ में रख के we have to proceed further. So for those who had a doubt कि why was Aamir Khan's name being taken
From today, start raising a question that why was his name never taken in the first place? Second, Siddharth Pithani as a director, Sushant and Riya working in one of the films, Fanny, Cyclone, which was half shot in Ladakh and Odisha as well. Dude, बहुत कुछ काला है. One question, Bharat. So will Sushant ask his Priyanka Di to leave based on allegations by a random Thai? You never know, KD General, if he asked Priyanka Di to leave. See, a WhatsApp chat can be created. There are a lot of chats that has been created. और इतनी ज़्यादा चैट्स निकाल निकाल के फैला दी गई है कि लोग आज की डेट में कंफ्यूज्ड हैं कि यार हमने तो वो भी पढ़ा था, हमने वो भी पढ़ा था. तो अब पीपल हेजिटेट टू ट्रस्ट कंप्लीटली कि यार क्या मैं ये पढ़ रहा हूँ, क्या ये सही है. तभी आज हम कोई आर्टिकल भी देखते हैं तो हम एक देख के उससे सेटिस्फाई होने की जगह वी गो टू द सेकंड वन, वी ट्राई टू फाइंड द थर्ड वन कि मे बी this gets us what we are looking for, or maybe this will help us confirm that this news already exists. We are not speculating, hope, peace, trust. We are trying to consider all possibilities. Speculating is a different thing. Speculating would be wherein we have already decided that this is what has happened, कि यार नहीं, अगर डार्क वेब पे वीडियो चली है तो डार्क वेब पे वीडियो चली है. That is called speculation. But we are considering all possibilities. कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. And we do not need to judge Sushant for that. At all, no. We need to judge the situations which were around him. And that's what we are doing. We are trying to contemplate and understand कि वो जो situation रही होगी उस situation में यार कैसे हुआ होगा, या फिर माउंट ब्लैंक का प्लान बना होगा तो वो कैसे बना होगा, who might have been behind it, and everything that falls and follows. पीके का connection is also there. वो एक बट वो बहुत पहले का है, मतलब वो 2019 से तो काफ़ी पहले का है. इट इज़ 2019 when things started in the month of June itself, when Riya and Sushant were working in a movie which was being directed by Siddharth Pithani. Itself is a big point. Exactly, KD General. It is considering all possible scenarios and being open to anything and everything, because you never know tomorrow what extra comes out or what something unexpected comes out, and you'll say ki, dude, this was in front of me for the last 1.5 years and I never spoke about it, I never even thought about it. Just like today we talked about Aamir Khan. उसका तो नाम भी CDR में है, उसके बावजूद उसका नाम नहीं किसी ने लिया. सो इम्पोर्टेंट हो जाता है ना. सो माई रिक्वेस्ट टू पीपल वुड बी दैट सी, मैं जो नई नई चीज़ें लेके, ये जो नई चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, these are not proving anything, but these are some twisted things which is only proving one thing, that there was 100, I mean, one of the proof that gets added to the pile that you already have, that things are wrong here in a big way, and that's what's happening. See, it's okay, hope, peace, trust. We just need to have our opinion in terms of keeping an open mind to all the possibilities. And there are people who would speculate as well. Sometimes speculating helps them to know that speculating is not right, and we should think of all the aspects, all the perspectives. And I would like to thank everyone for being here till so late. ये session होना भी नहीं था. But I said that something that I had already committed since the noon, why not? I should stand.
And I would only request everyone to please share this session as much as you can. This is really important because there are new things in the horizon. And just one moment. Okay. Chalo, ठीक है. So I would request you people to please share this session so that people open their eyes to this possibility as well, the Amir Khan angle. And I'm not saying again disclaimer पढ़ लेना, session के शुरू में लगा है. Amir Khan, I'm not saying he had a direct hand, but people connected to him are connected to this case. The pattern connected to Faisal Khan, who is related to Amir Khan, is connected to this case. And the house where this crime has taken place is connected to this imperfectionist, so-called Mr. Perfectionist. So, like the session, leave your feedback if you wish to. I thought of keeping it small and crisp because it is important for us to also understand Amir Khan का role. And इस चीज़ पे अगर थोड़ी रिसर्च कर सको, जो ये सिद्धार्थ पिठानी being a director who casted, I mean, Sushant and Riya, we need to dig more on that, and we will. And I'll talk to Nitesh R. Rai today if he was the one. And tomorrow I'll see you with बहुत सारी नई चीज़ें जो मुझे मिली हैं, थोड़ी ट्विस्टेड है, बट हम बात करेंगे. Thank you everyone once again. Hope you have a good night and let the facts do the talking. One life.